Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well as well. So children, जैसे कि आप सबको पता है कि moral science, they give us life lessons and we always learn something good, okay, for our benefit from all these lessons. So बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं about something which may be happening with you now, okay, as we are talking. Yes, we are going to talk about peer pressure and let's talk about how do you go beyond peer pressure, okay. You need to be who you are, okay, and say what you feel, because those who mind, okay, they don't matter, and those who matter, they don't mind. So बच्चों, कभी कभी हम लोग ना दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोल देते हैं, okay, but जब हम सच्चाई से दूसरों को कुछ बताते हैं ना, इफ यू डोंट लाइक समथिंग एंड यू बी ऑनेस्ट विद दैट पर्सन एंड टेल दैट पर्सन, ओके, दैट शोज हाउ मैच्योर यू आर, ओके. अगर वो सामने वाला बुरा मान जाता है, दैट मीन्स दे रियली डिड नॉट केयर, ओके. बट वो जब बुरा नहीं मानते एंड दे एक्सेप्ट इट, दैट मीन्स दे रियली केयर फॉर यू एंड दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ योर्स. सो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है ना कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, दैट मीन्स दे आर योर पियर्स, ओके. So you look at them and you want to become like them, okay, and you are living under that peer pressure. But children, that does not matter. You should be who you are. You don't need to change yourself because of others, okay. You may be in a different situation, they may be in a different situation, but you have to be yourself. Clear? So let's get in gear first. It's important to know how to handle. It's very important to know how to handle peer pressure when it goes against your beliefs. Create a list of 4 actions you would take if you feel peer pressure to do something you disagree with. So कभी कभी हमारे दोस्त हमें इतना बहकाते हैं, okay, इतना बुली करते, इतना हमारा ब्रेन वॉश करते हैं to do things their way कि हम अपने आप को भूल जाते. And in turn what happens? We have to pay a price for it. वो तो बच जाते हैं, वो तो निकल जाते हैं, और एंड में किसको उसका नतीजा भुगतना पड़ता है? हमें. सो चिल्ड्रन, नेवर डू एनीथिंग अंडर पीयर प्रेशर, ओके. डू इट ओनली इफ यू फील लाइक डूइंग इट. देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन फोर्स यू टू डू एनीथिंग. ऑलराइट. So children, let's discuss some questions orally. Why do people sometimes give in to peer pressure? कभी कभी हम लोग अपने peer pressure में आके give in क्यों कर देते हैं? Okay? Why is that so? Maybe because we don't want to lose our friends. Maybe we are always scared कि यार नए दोस्त कैसे बनेंगे मेरे, अगर मैंने उसको हर्ट किया, उसकी बात नहीं मानी तो वो तो मुझसे दोस्ती तोड़ देगा. Aren't we always under that fear? How can peer pressure affect your choices? Peer pressure की वजह से हमारी choices कैसे affect हो सकते हैं? Maybe we don't want to do certain things, but वो हमें force कर रहे, okay, to do what they are saying. Okay, maybe say for example, let's talk about a simple thing. You're not good at playing football. Okay, you know that I cannot play football. Now your peers are forcing you to join the game of football. Okay, you know that you cannot play. So what may happen? That you're just standing still, or you may get pushed by someone, you fall, you get hurt. So who's suffering here? You yourself. Rather, you can convince your friends ki you guys play, I will sit outside and enjoy your match and cheer for you all, isn't it? So how difficult is it to convince your peers and friends to think otherwise and do in your way? So how can true friends help you avoid negative peer pressure? So ऐसे भी दोस्त होंगे जो आपके true friends होंगे, जो आपको warn करेंगे कि don't do that, okay? It's not good for you, okay? It's not going to lead you anywhere. तो अगर हम ऐसे दोस्तों की बात मानते हैं, that means, okay, they are our true friends and the other ones are having a negative impact on us. Do you think peer pressure can ever be positive? Why or why not? So कभी-कभी peer pressure can be an encouragement to do something that you are not confident about doing, but कभी-कभी it can be it can be not for your good also. It can have a negative effect also. So there are pros and cons for that as well. Okay, chalo. Now let's talk about the price of conformity. Pooja was a new girl in Meera's class.
She had become popular among the students because she was fun-loving and liked to show off a bit. After a few days, she had made her own group of friends. The girls in her group would often visit Pooja's house. Pooja's parents were both working, so her house was a good place for the girls to hang out during the day. So पूजा जो है मीरा के क्लास में नई स्टूडेंट है. ओके कुछ ही दिनों में वो बाकी स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर हो गई बिकॉज शी वॉज वेरी फन लविंग. ओके और थोड़ा सा शो ऑफ भी करती थी. सो कुछ दिनों के बाद पूजा ने अपने खुद के फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया और वो दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट. एंड क्योंकि पूजा के पेरेंट्स दे वर वर्किंग पेरेंट्स, सो उसकी वजह से पूजा का घर इट बिकेम लाइक अ हैंग आउट प्लेस फॉर एवरीवन. So Meera was the top student in the class. Pooja had tried to switch seats with Meera, but Meera always sat with Asha, her best friend. Asha was a simple and hard-working girl, and both she and Meera were usually focused on their studies. Meera was always polite to Pooja, though. So Meera जो है वो पूरे she was the top student. Okay. अब पूजा ने ट्राई तो किया था सीट स्विच करने के लिए विथ मीरा, बट मीरा हमेशा आशा के साथ ही बैठती थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. अब आशा जो थी एक सिंपल लड़की थी, वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑल. एंड यू नो यूजुअली मीरा यूज टू ऑलवेज फोकस ऑन हर स्टडी. एंड मीरा वॉज वेरी नाइस एंड पोलाइट टू पूजा एज वेल. वन डे, okay, one morning, Meera missed the school bus. Pooja happened to be passing by in her car and asked her driver to stop and give Meera a ride to school. On the way, Meera and Pooja talked a lot and Meera enjoyed Pooja's company. It was different from the usual talks about books and studies that she had with Asha. So, एक दिन क्या होता है, मीरा की बस मिस हो जाती है. ओके सो पूजा देखती है और पूजा उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है. सो तभी वो दोनों गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं. तो मीरा देखती है कि जब वो पूजा के साथ बात कर रही होती है, सो दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एल्स देन अबाउट बुक्स एंड स्टडीज एंड ऑल. बट विथ आशा, मीरा एंड आशा ऑलवेज स्पोक अबाउट बुक्स एंड स्टडीज. सो स्लोली मीरा एंड पूजा दे बिकेम फ्रेंड्स. अब धीरे धीरे मीरा और पूजा अच्छे दोस्त बन गए. द डे बिफोर द विंटर ब्रेक, पूजा एंड हर फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, प्लान्ड अ पार्टी एट हर हाउस. ओके अब विंटर ब्रेक के पहले पूजा ने अपने दोस्तों के साथ घर पे पार्टी प्लान की. पूजा इन्वाइटेड मीरा टू जॉइन एंड नोइंग मीरा वुडंट कम विदाउट आशा, शी इन्वाइटेड आशा टू. ओके अब पूजा ने मीरा को इन्वाइट किया और उसको पता था कि मीरा आशा के बिना नहीं आएगी, तो उसने आशा को भी बुला लिया. Okay, so Pooja's father was on a business trip and her mother was at work. So they decided to order pizza from a nearby shop and watch some movies. So पूजा के पापा तो business trip पे बाहर गए थे और मम्मी ऑफिस गई थी, तो उन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया and they were going to watch some movies. Since winter break was about to start, Meera and Asha agreed to go. Okay, so अब winter break शुरू होने वाला था, तो Meera and Asha said, okay, let's go. The party was a lot of fun. Okay, they ate pizza, they drank Coke, and they finished a delicious cake Pooja's mother had baked the previous day. So अब party तो बहुत मज़ेदार थी. Everyone was having fun. Okay, उन्होंने pizza खाया, they had Coke. Okay, they also had the cake which Pooja's mother had baked. They played games like Truth or Dare, Dumb Charades. Okay, Meera and Asha started to relax and enjoy themselves. Then Pooja revealed a surprise, a DVD of a new movie that all the girls had been talking about. Everyone except Meera and Asha seemed to know what the movie was. Okay, so they were having a good time. Meera and Asha were also enjoying themselves. Okay, तभी पूजा ने एक DVD निकाली. Okay, अब सब लड़कियों को तो बाकियों को तो पता था इस DVD में क्या है, except for Meera and Asha. What movie is this? I have never heard of it before. Asha whispered to Meera. अब आशा ने मीरा से कहा, ये कौन सा मूवी है, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है. Meera shrugged. It's probably an English movie. Maybe you missed the name. All the girls sat down in front of Pooja's laptop, eager to watch. Okay? अब मीरा ने कहा कि शायद से कोई इंग्लिश मूवी होगी जिसका नाम तुमने मिस किया होगा. अब सारी लड़कियां तो काफ़ी ईगर थी, enthusiastic थी to watch that movie. और वो पूजा के लैपटॉप के सामने eagerly they were waiting. As soon as the opening credits started, Asha spoke up. Wait a minute, this movie is rated for adults only. Are we going to watch this?
सो अब आशा ने देखा कि जब जैसे ही मूवी के टाइटल्स क्रेडिट्स शुरू हो गए, आशा नोटिस दैट इट इज़ रिटन फॉर अडल्ट्स ओनली. सो कहती उसने तुरंत बोला कि आर वी रियली गोइंग टू वॉच दिस. For a moment, the room felt silent. All the girls knew what watching an adult movie was wrong, okay? But that was also why they were so excited to watch it. None of them, especially Meera, had the courage to speak up, fearing they would be called boring or too serious. अब बाकियों को भी वो टेंशन आने लगा कि they knew कि adult movie देखना गलत है, okay? So although they were excited to watch the movie, but still, you should not watch those movies is what everyone realized. But किसी में वो हिम्मत ही नहीं थी, even मीरा में हिम्मत नहीं थी to say anything about it, okay? नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि you are so boring, you are so serious. So what? Said Kavita, another girl from the group. No one's here to see us. It's just us girls. No one will know. So कविता कहते तो उसमें क्या हो गया, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो हमें देख रहा है, सो हम लोग ही तो हैं, सो उसमें क्या हुआ. That's true, but do we really need someone to tell us it's wrong when we already know it's not the right thing to do? आशा replied. तो आशा कहती है कि जो तुम कह रही हो सही है, बट क्या तुम्हें रियली ऐसे लगता है कि there should be someone जो हमें देखे और हमें कहे कि ये गलत चीज़ है, जबकि हमें खुद पता है कि ये जो हो रहा है, जो हम देखने वाले हैं, वो हमें नहीं देखने चाहिए. Oh, come on, Asha. The other girls join in. We won't get caught. Meera, say something. Asha listens to you. अब सब लोग बोलने लगे, आशा को छोड़ दो यार, उसमें क्या है, हम नहीं पकड़े जाएंगे. फिर वो मीरा को कहते कि मीरा, why don't you convince आशा, वो तो तुम्हारी बातें सुनती है. So Meera began to feel that maybe what they were about to do wasn't such a big deal. The pressure from her friends was strong and she couldn't think clearly. Okay? अब मीरा भी सोचने लगी क्या उसमें क्या है, it is not a big deal. अब जो peer pressure बढ़ने लगा उसका, so she also felt that it's okay, and उसका भी जो thinking है, she also could not think clearly because they were like pressurizing her. She asked Asha to join in and have fun like others. So मीरा भी आशा को बोलती है कि चलो even you joining, let's have fun. But Asha wasn't one to give in so easily. But Asha ready नहीं हो रही थी. So I'm sorry, but I can't go along with this, she said firmly. It's not about getting caught or getting in trouble. It's about breaking the trust our parents have in us. So Asha कहती है, no, I cannot be a part of this because ये उस चीज़ के बारे में है ही नहीं कि we are going to get caught या हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे. It is about हमारे पेरेंट्स हमें ट्रस्ट करते, ओके. वी आर गोइंग टू ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स विच इज़ नॉट गुड, ओके. देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर वेज टू हैव फन, ओके. मज़ा ही करना है तो और भी तरीके हैं, ओके. इफ़ यू आर ऑल अप फॉर दोज, आई विल स्टे, इफ़ नॉट आई एम लीविंग. कहते हैं और भी तरीके हैं मज़ा करने के, अगर तुम दूसरी तरीके से मज़ा कर सकते तो ठीक है, अगर यही करना है तो आई एम लीविंग. दैट्स व्हाट आशा वाज वेरी क्लियर एंड शी सेड दैट. So there was a heavy silence in the room. Meera wanted to side with Asha. But what would Pooja, Kavita and others think? She didn't want to be made fun of, so she avoided Asha's gaze and stayed quiet. अब मीरा को भी आशा की साइड तो लेनी थी, बट बिकॉज उसको लगा कि पूजा, कविता, बाकी लोग क्या समझेंगे उसके बारे में, इसके लिए वो शांत वहाँ पे ही खड़ी रह गई एंड शी वॉज नॉट इवन हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट विद आशा. When Pooja angrily asked if anyone else wanted to leave with Asha, Meera sat still like a statue. Asha looked at her, hurt, but then quietly left the house without her. Okay? जब पूजा ने किसी से पूछा, पूजा ने सबसे पूछा कि ऐसा कोई और है जिसको ये घर छोड़ के जाना है, just like the way Asha wants to, so they are free to get up and go. But Meera, although she wanted to, वो वहाँ पे शांत सी बैठ ही गई. The girls went ahead and they watched the movie, but Meera did not enjoy it. Something kept bothering her deep down. Okay, now Asha left from there. Asha was hurt कि मीरा ने उसका वो support नहीं किया. Okay, she quietly left from there. Okay, अब ये जो बाकी लड़कियां हैं वो मूवी देखने लगी. अब they were enjoying, but Meera did not enjoy even a bit. उसको लग रहा था कि something is bothering her deep down. That evening, when Meera got home, her mother greeted her with a smile. Hi Meera, did you have a good time?
सो उसके बाद मीरा घर जाती है, तो जब घर जाती है तो उसकी मम्मी उसको स्माइल के साथ ग्रीट करती है, कहती है हाउ वाज इट, डिड यू हैव अ गुड टाइम. At that moment, Meera understood what Asha had meant by the trust of parents because she couldn't look her mother in her eye. So, उसको तब समझ में आया, okay, when you know that whatever Asha was saying was right, that our parents, they trust us, okay, and now मीरा वॉज इन सच अ सिचुएशन कि उसने कुछ तो गलत किया था, इसकी वजह से अपनी वो मम्मी के साथ नज़र भी नहीं मिला पा रही थी. So later that night, lying in bed, Meera couldn't sleep. She decided that whenever she felt confused about what to do in the future, she would ask herself one question. Will I be able to look my parents in the eye if I do this? Okay? अब उस रात को मीरा को नींद नहीं आई. ओके वो काफ़ी देर तक सोचने लगी. उसके बाद उसने डिसाइड किया कि जब भी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी फ्यूचर में, ओके, कि मुझे क्या करना चाहिए, तब मैं एक सवाल पूछूंगी खुद से कि ये करने से क्या मैं अपने पेरेंट्स के साथ नज़रें मिला सकती हूँ. ओके, शी ऑल्सो प्रॉमिस्ड हरसेल्फ never to give in to peer pressure again and to always use her own judgment before following someone else's advice. उसने ये भी ठान लिया कि कभी भी peer pressure में give in नहीं करना है, वही करना है जो उसे लगता है कि वो उसके लिए सही है. ओके, एंड टू यूज़ योर ओन जजमेंट. ओके, so the next morning felt like a fresh start. Meera went to Asha's house to apologize and make plans for the winter break. They ended up having a fun-filled vacation with exciting activities, games and lots of fun. So next day सुबह मीरा आशा के घर पे गई, उससे माफ़ी मांग ली उसने, and then they planned for the winter break and they had planned a lot of fun-filled vacation activities, games and lots of fun. As the math lecture ended, the teacher asked a question. Both Meera and Asha raised their hands. Meera glanced at Pooja and her group sitting at the back of the classroom. They were all looking down, avoiding the teacher's gaze. Meera smiled to herself. She could have been in their position if it weren't for Asha. She looked at her best friend with gratitude, knowing she would never let peer pressure control her again. So, जैसे math lecture खत्म हो गया, टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो मीरा और आशा दोनों ने हाथ ऊपर किए. अब मीरा ने जब पूजा की तरफ देखा, उसके दोस्तों की तरफ देखा, तो दे वर लाइक दे वर नॉट इवन लुकिंग एट द टीचर. ओके, दे वर नॉट एबल टू हैव एन आई कॉन्टैक्ट विद द टीचर. नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी. सो मीरा वॉज जस्ट स्माइलिंग एंड थिंकिंग कि आज वो भी उसी पोजिशन में होती. ओके, बट इट्स ऑल थैंक्स टू आशा दैट she that with her gratitude, okay, she knew that we should not give in to the peer pressure. We should always do what is right for us. Okay, हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज़ जो होती है वो अलग होती है. Okay, as compared to what the others have. Okay, so we have to think about our priorities. We have to think about our parents, our family, okay, who is looking up to us. Okay, we should not break their trust, and we should do what is right rather than falling into peer pressure and doing something wrong. Okay, so what's the key message here? True friendship helps us stand by what is right even in the face of peer pressure. A good friend will guide us to make the right choices and remind us of our values. Staying true to ourselves is more important than seeking approval from others. Okay, तो true friendship वही होती है जहाँ पे हम जो सही है उसके साथ खड़े रहते हैं. Okay, we do not give in to the peer pressure. True, अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारे साथ खड़ा रहता है. ओके, ना कि हमें आगे धक्का मार के खुद पीछे हट जाते. ओके, those are not your true friends. True friends will always stand by you, okay, and fight with you rather than pushing you ahead and trying to be safe themselves. All right, so stay true to yourself first. Okay, because that is more important. You understanding what is right for you is more important. What is your need? What is your situation? Okay, that is more important than falling for peer pressure. All right, so things to keep in mind: peer pressure is when people around you try to influence your decisions or actions. Okay,
पीयर प्रेशर तब होता है जब आपके जो दोस्त होते हैं या जो लोग होते हैं आपके आसपास आपके माइंड को, आपके थिंकिंग को ब्लॉक कर देते, ओके, एंड दे वांट यू टू डू व्हाट दे थिंक इज राइट, ओके, एंड उसकी वजह से कहते हैं ना आपके आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, ओके, यू आर नॉट एबल टू थिंक वेल एंड दैट्स व्हेन यू टेक रॉन्ग डिसीजंस एंड रॉन्ग एक्शंस. Peer pressure can make it hard to say no even when you know something is wrong. Peer pressure में हम कभी कभी ना बोल ही नहीं पाते, ओके, जबकि आपको पता है कि वो गलत है, ओके. सो लर्न टू से अ नो when it is wrong. Okay, good friends, they respect your choices and don't force you to do things you are uncomfortable with. जो अच्छे दोस्त होते हैं वो कभी भी आपको गलत चीज़ करने के लिए बढ़ावा देंगे ही नहीं, या ऐसी कोई भी चीज़ आपसे नहीं करवाएंगे जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हो जाओ. Alright, so children, learn from this. This is the stage where we're going to begin a new life, okay, your new future, okay. So this is like a stepping stone for you, and you will always, okay, in every stage of life face peer pressure, but don't give in. Do what you think is right, okay. Think about your family, okay, and think about your own conscience. All right, now children, jaldi se quickly read this entire chapter and get on to the back exercise. Get going.